मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। तो सारे दर्शक मेरी तरह आज भी उत्सुकता से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत बड़ी रिलीफ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया इस सारी कार्यवाही पे, और प्रोटेक्शन का ऑर्डर आज भी रिएटरेट हुआ कि जो शिवलिंग है उस क्षेत्र को जो अवतरित हुआ है कितने सैकड़ों साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद में, उसको उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। दैट्स अ मैटर ऑफ बिग रिलीफ। परंतु जो सवाल सबके मन में उठ रहा है कि क्या ये भी केस ज्ञानवापी मस्जिद जो बनाई गई मंदिर के ऊपर, वैसे तो ज्ञान का इस्लाम में कोई रोल नहीं होता, ज्ञानवापी नाम भी फिट ही नहीं बैठता मस्जिद पे, तो क्या ये झगड़ा भी उतने ही साल चलेगा, सैकड़ों साल तक, जितना अयोध्या मंदिर का चला, कि इसके लिए कुछ फास्ट ट्रैक इलाज ढूंढे जाएंगे इस फसाद को खत्म करने के लिए। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे प्रिय मित्र भी हैं, मेरे प्रिय, मैं गुरु भी कह सकती हूँ, डॉक्टर कपिल कपूर। मैं इनसे कभी पढ़ी तो नहीं, but I learn a lot from him, and in that sense I consider Kapil ji a mentor and a guru. कपिल जी, आप जरा अपना कैमरा ठीक कीजिए, बहुत नहीं, हाँ, बस 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 बस, थैंक यू कपिल जी। और आप आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस सवाल पे। आई नो हाउ क्लोज दिस इशू इज टू योर हार्ट, पर आप सीरियस लग रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी भी लग रहे हो, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा है कि as you said, this is very close to my heart because I've been going to Varanasi since 1990, and every time, after 93, 92, 93, every time I used to go to Kashi Vishwanath, the crowded streets through which we passed, as if, for its existence, that temple was surviving in a corner. And behind that, we had this huge mosque, whose back wall was a Hindu temple's wall. I mean, there could be no doubt about it. So I think the vandalizers in a hurry, they were in a hurry, or maybe they were incompetent. They just took that back wall and built. They took the foundation and they built on it. They didn't have to build the foundation. And whatever they destroyed was made to serve as the base. वो जैसे मसाला भरते हैं ना नीचे बिल्डिंग बनाने के लिए, सारा डाल के ऊपर बना दिया. And it is, as you noted, it is the name Gyanvapi which used to, surprise us. That how can a mosque bear that name? And some people say that out of lethargy, Aurangzeb did not change the name, or maybe he didn't care, or maybe he thought that the Muslims will perhaps also gain some knowledge by using that term, the well of knowledge, or the water of knowledge, water. There were so many legends surrounding it. You see, Hindu race memory is full of vandalization of all their sacred places, of brutal massacres of Brahmins, of the massacres of male children above 5-year-old,
and carrying away of middle-aged men and women as slaves through the Hindu Kush mountains to Uzbekistan. Where, in Tashkent, you still have records of the rate at which the Hindu slaves were sold. You see, as Bill Durant in his History of Civilization, chapter 10, says that the Mohammedan conquest of India is the bloodiest chapter in human history. So the amount of murder and slaughter, and yet the survival, yet we survived, which is amazing because Egypt was defeated and converted in about 29 years. Syria was converted and defeated in 21 years. Iran was converted and defeated in 30 years. And Karl Marx, in his notes on Indian history, he asks a very, very important question. He says that the great valiant Persians, the great Persian Empire, Xerxes and Darius, they were defeated and converted in 30 years. How come from the borders of Iran and India to Delhi, about 1100 miles, it took them 400 years, the Arab armies. It took them 400 years. Every inch was fought. Every inch was fought. There was not an hour or a time when somebody was not fighting. And we have a tremendous record of Bappa Rawal onwards, the Sisodias, fighting the invaders for almost 800 years, 1500 or something, middle of 16th century. And then, the Kakatiyas took over in the 14th century. Then the Vijayanagar Empire took over in the late 14th, 15th century. And when Vijayanagar Empire was vanquished in 1565, the Marathas took over. And the Marathas put paid to the Mughal Empire practically. This temple, the Hindu civilization, is the most ancient. It's the only surviving civilization of the 46 human civilizations. And it is still alive. And it is, as you said, Madhuji, just now, it is the only open, tolerant, pluralistic, human and humane, system, social and political system, tolerance. And we are not one God people. We are not one truth people. We are not one people. We believe everyone has a right to exist, and there can be more than one truth, and there can be more than one person who is right. This, some people say, this was the cause of our defeats and loss. Others say this was the reason why we survived. But there is no doubt that for 1,000 years, practically, 1193 is a watershed. When Prithviraj Chauhan lost to Gauri, the Hindus lost political power in the country. And they have not yet got it back. The political power they lost in 1193, they haven't got it back. For some years now, there is a feeling that the Hindus are beginning to fight back. Because, well, they fought all through. The 1,000 years was not a year of defeat, years of endless defeat. It was years of endless resistance, both by weapons and by ideas. Imagine, for the 181 years of the Mughal period, 1526 to 1707, 182 years. For the 182 years of Mughal period, we have more than 182 years of the 10 Sikh gurus standing at the tall wall between the oppressed Hindus and the Mughal rulers. Guru Nanak wrote
after the Battle of Imnabad, when Babur defeated Dimnabad but lost so many men, became very angry and ordered a general slaughter of the old and the women and the children. And then Guru Nanak wrote Babarwani, where he asks a question to God. Okay, when these children were, being slaughtered, didn't you hear their cries? You know, so that was about 1520. From 1520, you see, in 1707, Aurangzeb died. So I say Mughal period 1526 to 1707, 182 years. But in those 182 years, we had the 10 gurus for 1520 to 1708 when Guru Gobind Singh was stabbed to death in Nasik. And these Sikh gurus, they instilled the spine in the Hindus, both of Shastra, the Vedanta. गुरु नानक अपनी उदासियों में कपिल जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बुरा मत मानो, अब हमें इन्हें सिख गुरु कहना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सिख तो खालिस्तानी हैं, अब बन गए, और हम और आप उनकी शिक्षा मानते हैं, हम उनके सिख हैं, पर क्योंकि सिख शब्द को इन्होंने इतना जलील कर दिया है, नहीं, अप्रोप्रिएट करा नहीं, जलील किया है। आप अगर पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट बन के गुरुद्वारों में फसाद करते हो, आपको सिख कहलाने का हक नहीं। तो हिंदू गुरुज हैं जी, हम इनको मानने को तैयार नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% सच है, क्योंकि सारे हिंदू थे और क्षत्रिय थे, और सात गुरु सोढ़ी थे, और गोविंद राय सोढ़ी थे। पर अकाल from the Vedanta Brahman to Khalsa, picking up the arms, they were this between us. We suffered a lot. And, remember in Bible, we are told about the Solomon temple being destroyed. Solomon temple. And we are told how the Jews, they were witness to it and how they cried. Then they were taken prisoners. They were taken to Babylon. And in the Psalms, I think one of the Psalms, the king asked them to sing some song of joy. That kind of suffering, the Hindus underwent again and again. And when the Kashi Vishwanatha, which is the center of the universe for us, it's on the Trishul of Shiva. It is located on Trishul. It is one of the 2 or 3 longest living, surviving cities of the world. Palmyra in Syria was as old and living, but Palmyra has recently been completely destroyed by the ISIS and these people. So Kashi is one of the oldest city in the world, living and surviving, and it is on Trishula. It is the center of the universe. And Vishveshwara, the God, the Lord Shiva, is the Vishwaka Ishwar. He is the God of the whole world, whole universe. And it was destroyed. It was destroyed repeatedly. It was destroyed by Qutbuddin Aibak in 1194-5 after Gauri defeated Jaichand of Kannauj. Kannauj. He came to here and he destroyed the temple. It was rebuilt by local people, but 50 years later, it was destroyed by Sikandar Lodhi in 1250 or so. It was rebuilt by the Gadawala Rajputs. It was rebuilt, but it was again destroyed. It was again destroyed by, I think, Puri or Sultanate or somebody. I think I have the record here. It was destroyed once again. And it was destroyed once again, and in 1245, in 1245, it was destroyed by Sikandar Lodhi. Then in almost 1540, Raja Man Singh. This is very interesting.
We know Raja Man Singh Kashwaha of Jaipur as one who collaborated. We call him, he collaborated with the Mughals. But Raja Man Singh, he did so much good. He rebuilt this temple, and in Mathura, when there was a Krishna temple away from the birthplace temple, it was destroyed. The Vigraha was taken away by Man Singh's Rajputs, meant to be taken to Dwaraka. And the Pandits said, don't put it down on the way, but they put it down at Nathdwara. And the Vigraha at Nathdwara is a Vigraha which was there in Mathura. Again, Man Singh had saved it. So Raja Man Singh rebuilt it. But again, along with Man Singh in 1585, Todermal put a lot of money into it, renovated it. But in 1669, the grand destruction, final destruction. Earlier they were destroying. Now it was broken and it was built upon the Gyanvapi, the three tombs that we see. Now, in between, in 1750, Malhar Rao Holkar of Indore, he planned to attack Banaras to destroy this mosque and rebuild the temple. But the Nawab of Awadh, who had been given the power to govern that area by the Marathas themselves, so he pleaded with Malhar Rao not to destroy it, and it didn't materialize. But then 27 years later, 1777, 27 years later, the daughter-in-law of Malhar Rao Holkar, Ahalyabai, she rebuilt the temple. She rebuilt the temple, the present temple, which was renovated by Modi ji recently. And in 1805, Maharaja Ranjit Singh, whom, I mean, even before you scolded me, in one of my lectures, I had called him the last great Hindu emperor. The last great Hindu emperor, Maharaja Ranjit Singh. He मैं gave आपको question बोल 1 ton gold हम्म, to embellish the tower of this Kashi Vishwanath, which we can still see, you know. And after that, in 1828, the daughter of Daulat Rao Sindhia of Gwalior, Baijabai, she built a corridor of pillars, which we still see. Some of those pillars broken down are part of what they have in the survey they have seen and recorded. And it was, in fact, till 90s, you could see it near the Nandi, that the pillars and the corridor. They built the corridor in 1828. And then, of course, the British came, and then the entire story of rights to pray. The Hindus were praying regularly till 1991. When after the Ram Mandir, you know, that the disputed building was brought down, the Congress government brought in the law 1991 Act 1992, that the character of religious places of worship as it obtained in August 1947 cannot be changed or questioned. And it was opposed. There are two petitions were made against it. They are lying with the Supreme Court, and the result has not yet come. The petitions have violated. They say that this act violates the innate right of the Hindus, and the right to worship. And because the right to worship was stopped in 92, and originally the British had ordered that only 3 or 4 Muslims can do namaz. But now, whole crowds go there. All the crowds go there. But the Hindu right to worship was restricted under that in that act by the Congress government then. So we are we are in a country. Remember, we are the only people
Many people say that the Mughals, Muslim Sultanate and Mughals imposed jizya and Hindus paid a tax for being Hindus. I have read recently a wonderful, writing by somebody that Hindus are still paying jizya. Don't you think we are paying jizya? Our temple income, all the income of our temples, all the tax that we give, that Yeah. money is used to pay the salaries of imams, to build the namaz grounds, to build madrasas, to fund Hajj and Hajj houses. It is our money, so we are still paying the jizya. और The Hindus लाभार्थी इनके घर भी बनवा के दे रहे हैं, इनको पानी भी गैस कनेक्शन फ्री मिल रहा है लाभार्थियों को, वो भी हमारे टैक्स पेयर से जा रहा है, हमारे टैक्स से जा उनको टैक्स वैक्स देते नहीं. So we are still the dhimmis, we are the people who belong to the other culture. We are kafirs still, and we are still paying a tax for being what we are, and that is our tragedy. The laws are against us. The courts decide against us, on small to big matters, and the so-called educated, the so-called educated lobby, English educated lobby, they what are called urban Naxals and others. More than that, the Lutyens lobby, they are against us. Our own people are against us. So now in this case, Gyanvapi, I knew there is a problem because the other people say that it is not Shivlinga, it's a fountain. And they say that in the Atala Masjid in Jaunpur also, there is a similar structure. You see? Now that can be explained in two ways. Because that Atala Masjid was also built after destroying the temple. And this Shivlinga was surrounded by a wall, water that was being used as vazu, So I don't know, I was anxious, worried. Our people were so happy, that Baba mil gaye. But our courts are inhabited by people who do not know the meaning of the word Baba and who are in fact disaffiliated from the tradition and culture of the country. And today also they said, what has been claimed as Shivling, if it has been found, you see, it should be protected. That is because the Muslim, the Paksha, the opponent, they objected to using the word Shivling. So they modified it, this statement. And then as has been claimed, claimed. So you already have a dispute there. You have first to settle this dispute. And then in this, all the other bits and pieces of evidence, the engravings and the floral designs and the Kamal and the Ganesha and the impressions of the goddesses and gods on the pillars and the broken pieces of temples and the huge wall behind the mosque, which is the wall of the earlier Hindu temple. All these have gone behind, and now the whole thing will focus on this. The only perhaps, as you say, they have not stopped the survey process from going on. I don't know what Varanasi court had decided today. Has it given 2 days more for survey or not? सर्वे तो हो गया कंप्लीट. No, they asked for 2 more days. Yes, that's going to continue. उस पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं है. पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो सर्वे का कमिश्नर था, उसको इन्होंने हटवा दिया. हट गया वो. उसको हटवा दिया इन्होंने अपनी पिटिशन से. और मैं ना एक आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसको मैं अभी दिखाऊंगी. और 2-3 चीजें मुझे याद आ रही है. एक तो इस टेम्पल के साथ औरंगजेब काल में क्या हुआ होगा, उसका बहुत ही सुंदर तो नहीं, ग्राफिक वर्णन
भैरप्पा जी के नॉवल आवरण में है. अच्छा. Have you read? I'm sure you've read it. No, I have not read it. Oh my God, it is really a chilling account, Okay. spine-chilling account of it's a novel set in modern age, और ये leftist circles के बारे में है, and how this young woman who tries to break away from her family knowledge traditions to becoming बहुत leftist progressive circles में, तो उसका कैसे फिर रियलाइजेशन होता है. वो बहुत गजब का नॉवल है, गोज बैक एंड फोर्थ, और कैसे सेक्स स्लेवरी की क्या, कैसे इस मंदिर को तोड़ा, क्या क्या क्या. और उसमें एज फार एज आई रिमेम्बर भैरप्पा जी ने, इफ आई रिमेम्बर राइट, ही हैज मेंशन्ड कि शिवलिंग को कुएं में बचाने के लिए डाला. ही मेंशन्स दैट. और उसमें भी अभिनव कि किस किस तरह के सैक्रिफाइसेस करके लोगों ने अपने, और कुछ नहीं, मंदिर टूट रहे हैं, पुजारियों ने और बाकी भक्तों ने जान की बाजी लगाकर अपनी मूर्तियां, अपनी डेटीज को बचाया. कम से कम वो ना भंग हो. बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं. और फ्लाइट ऑफ डेटीज जो किताब है मीनाक्षी लेखी की, वो तो इसी का सारा बयान करती है ना. 2-3 बातें मैं कहूंगी. एक तो आज एक बहुत ही टिपिकल आर्टिकल आया है which tells you the manner in which using human rights, democratic rights, constitutional rights vocabulary, ये हमारे गले में फंदा डाल रहे हैं और डाले जाते रहे हैं अभी भी. जरा वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल प्लीज ऑन कीजिए. या ये फहाद जुबेरी का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में. खून खोल गया मेरा तो. और कितनी सोफिस्टिकेटेड है. जी आप सोफिस्ट्री देखिए. On Gyanvapi mosque, we are debating the wrong question. कितना सही लगता है ना बंदा कि कोई गाली गलौज नहीं कर रहा. अब क्या, what was being searched for again since the violent slogan अयोध्या है, काशी है. ठीक है, ये वायलेंस हो गया. इन्होंने जो लाखों मंदिर तोड़े, जेनोसाइड्स की करे जा रहे हैं, वो वायलेंट नहीं है. दिस वाज एग्जामिन्ड. और Varanasi and Mathura are yet to come was exclaimed, has been found. ठीक है? No, not the shivling that the petitioners of the lawsuit filed in a Varanasi civil court, alleged to have found in the wuzu khana of the Gyanvapi mosque. वो कह रहा है वो नहीं मिला, शिवलिंग नहीं मिला. What has been found, or rather created, is a rupture in the wall that separates the modern constitutional democracy of India from its ancient and medieval polity, the polity characterized by expansionist warfare and legitimized by the divine instead of the values of modernity. Ab modernity about the medieval polity was the Muslim polity. Exactly, but वो कह रहा है कि अब after the blot on our modern history called the demolition of Babri Masjid, what we see unfolding in Varanasi is another legitimization of an apparent conflict in architectural history, which, if we have not already learned, is an exercise in violent majoritarianism. भीख मांगने अदालतों में जा रहे हैं हमने कोई जेनोसाइड नहीं की, कोई स्लॉटर नहीं किया. And did they, when they broke the temple, did they go to any court? Did they ask? Yes. Did they take any permission? Violent majoritarianism. एक मक्खी नहीं मारी, एक कॉकरोच नहीं मारा हिंदू पक्ष ने. अब सुनिए. The courts that entertained the matter and then went ahead in much haste to launch an investigation into what was the building's true nature are to be blamed. Had wiser discretion prevailed, or wise wisdom तो सारा इस्लाम के पास ही है, the petition would not have been entertained in the first place. The question should not have been asked. मतलब हमने सवाल ही पूछा, ये भी गलत. और अगर कोर्ट्स ने हमारी बात सुन ली
वो भी गिल्टी डिक्लेयर हो गई और इन्होंने पूरा जिहाद लॉन्च कर दिया है लोअर कोर्ट के खिलाफ, जज के खिलाफ, कि उसने एंटरटेन क्यों की। अब ये देखिए, architecture is one of the most commonly evident imprints that a civilization leaves. While manuscripts and fragile objects remain largely inaccessible to the people, confined to the walls of museums and restoration laboratories, architecture is out for everyone to experience. अब ये इनको दुख है कि फिजिकल फॉर्म जो है उसकी अगर बदल जाएगी, people use historic buildings as inhabited spaces and visit historic sites for heritage tourism. In both cases, architecture is loaded with histories of construction, destruction, appropriation, building, rebuilding, and more rebuilding. Every building around us is a physical imprint of the times that has lived through it. It is a physical manifestation, a record of layers of histories, and a lot of these histories are histories of conflict, a truth that cannot be escaped. To put it simply, the history of architecture is the history of politics too. अब ये कितनी सोफिस्ट्री है यहां तक तो। उसके बाद जो ये बातें कहते हैं, अगर अगला पेज हो तो किसी के पास, इफ यू डू यू हैव इट, नहीं है, प्लीज ट्राई टू गेट द नेक्स्ट पेज लोडेड। कपिल जी ये देखिए, ये अब आपने ये मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ कि दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट द कोर्ट्स. They have launched a war not only against the Supreme Court, which did not give them a stay order, परंतु जो लोअर कोर्ट के जज ने ये सर्वे होने दिया, उसकी तो जान पे बनाई है. अब पता नहीं क्या क्या करेंगे. शुक्र है यूपी में योगी जी हैं. अगर यही किसी कांग्रेस की रिजीम में होता तो अभी तक उनका घर सब कुछ जल गया. जज की हालत खराब हो गई होती है. अभी वो बचने नहीं थे. ये तो मेहरबानी है ईश्वर की, भोलेनाथ की, कि योगी जी हैं अभी मुख्यमंत्री. नहीं तो कहाँ इसको जिंदा रहने देते जज को, जिस तरह की बात. He says that we have asked a wrong question. In fact, I will go beyond. I think the Hindus have adopted a wrong approach. We should not stop. We should not stop saying this belongs to us and we are going to provide evidence. In fact, 1193 onwards, all the buildings that were constructed in the Muslim period, the government of India should demand an act in the parliament that all the Muslim buildings constructed during the Muslim period after 1193 should be put under a scanner, should be surveyed to find whether they have been built on some destroyed Hindu temples or educational places or not. And if there is an evidence, concrete evidence, the act should say the building should be returned to the original owners. The original, the question of the character of the building. What is the character of Gyanvapi Mosque? Is it a masjid? Is it a mosque? Can you call it a mosque? Is that the character? No, it's not a mosque. It's not a mosque even by the Islamic definition, because it has been built. When they perform namaz, all around them there are images. It's clear that this was a place that of kafirs. कुफर वाली जगह है, तो वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये मॉस्क नहीं है. इसका क्या है? Even the Act of 1992 should not apply, because if it applies, then we are not changing the character. We are restoring the character of the building. We are only emphasizing the character. गौरी शंकर के मंदिर में मार्जिन में तो पूजा अब भी हो रही है. So, और 1991 तक उसके अंदर पूजा होती थी. Then is it a mosque? I think we have approached it wrongly. We should stop, pleading with the people. Did the Islamic invaders ask anybody when they destroyed ruthlessly and slaughtered ruthlessly? We are in a situation like that of the Pandavas. They asked for 5 गांव दे दीजिए, बस 5 गांव. हाँ?
5 गांव दे दीजिए, वो आपके सारे दिल्ली के आसपास हैं, इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, बागपत एंड पानीपत एंड करनाल, कर्णप्रस्थ। देव 5 गांव नहीं दिए, हमने कहा 3 दे दीजिए बस, 3 नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो महाभारत होगा, और महाभारत इज द ओनली सोल्यूशन। You see, we should not stop pleading with the government. We should stop pleading, raising these questions in public and arguing and pursuing and all that. We should say any Hindu building that has been treaded upon, has been vandalized since 1193, must be returned to the Hindus. This is our agenda. And we should raise the demand, the government should pass an act of survey of all the buildings. You see, look, देखिए आजकल शहरों में क्या होता है, जगह बहुत क्राउडेड सिटीज हैं, दिल्ली में आपके भी क्या है, दिल्ली में लोग कहते हैं कि जब हमने ग्रेटर कैलाश में जमीन खरीदी वहां कुछ नहीं होता था और 8 आने गज मिलती थी, और आप जमाने आप 12वीं शताब्दी में और औरंगजेब के जमाने में जबकि पॉपुलेशन इंडिया की 20 करोड़ थी, 20 करोड़, तो देयर वर एम्प्टी ओपन स्पेसेस, large open spaces, forests. Why did they build their mosques on the destroyed temples? They could have built them in an open space. No, the British, with credit to them, they did not build their churches on destroyed temples. They built their churches on empty spaces. Why didn't they do? They didn't do it because their purpose was not religious. It was not to provide a place of worship, which is being claimed these days, कि नमाज चलनी चाहिए। औरंगजेब ने वो तोड़ के वो ज्ञानवापी मॉस्क नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई, उसने हिंदुओं को दलन करने के लिए, उनके छाती के ऊपर पैर रख के उनकी जो हीनता है उसको दिखाने के लिए किया, जिस तरह बेबीलोनियंस ने सोलोमन टेम्पल तोड़ के यहूदियों के साथ किया था। See? और यहूदी तो they neither forget nor they forgive. Every year they mourn the loss of that temple. For Hindus, they both forget and forgive. We have had people who tell us to forget and forgive. I think we should, our question is not wrong, our approach is wrong. We should demand every place, because Wasim Rizvi ji has listed, and he is was a Shia Muslim. He has listed 10 mosques, which he says are clearly built on temples. The Quwwatul Islam mosque near Qutub Minar. If you go there, you read the ASI notice. उसमें लिखा हुआ है might of Islam. Quwwatul Islam is the might of Islam, meaning this was built by destroying 27 Hindu and Jain temples. Telltale है, आप उसके ऊपर पहले पानी की जिसमें पैर डाल के जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, वहां 4th सेंचुरी का आयरन पिलर लगा हुआ है, चारों तरफ कॉरिडोर है जिसमें पिलर हिंदू पिलर्स हैं, हिंदू टेम्पल के. It should be forthwith returned to the Hindus. And the Shahi Eidgah of Mathura, the great temple built by Bir Singh Bundela, during Jahangir's time, because he had supported Jahangir when Jahangir had revolted against Akbar. So when Jahangir became the king, he told him, what do you want? He said, allow me to build that Janmasthan. So Keshav Dev temple he built in 1634. Keshav Dev temple, huge temple. He spent almost 54 lakh rupees in those days. They say it was so high that you could see the top of Taj Mahal from Mathura temple. You see, so high built. It was 35 years later, it was destroyed by Aurangzeb. And Aurangzeb destroyed. His fatwas of destroying these temples are all available in the Jaipur Pothi Khana. By the way, Jaipur Pothi Khana also has records that Akbar took over Mansing's ancestors' palace in Agra. You see, took over the palace, and they have the documents of agreement. He took over the palace of the ancestors of Mansingh, and in those days, naturally, Mansingh, he was a faithful servant of Akbar. He fought many battles for him,
He maintained his empire, but the reward he got, he could not resist. He had to give. He had to give him, and it was a palace of his ancestors. Ancestors. So the Farmans of Aurangzeb, destroying 3 temples on the same day: Somnath, Mathura Janamasthan, and Kashi Vishwanath. How can this Zuberi fellow ask him first to explain what was being done? What was being done? The medieval polity, was it that of the Hindus? It was that of the Muslims. And will they? In fact, the Christians, the Pope, finally in 1980s, he apologized for the Holocaust on the Jews. I think, the top Muslim ulemas should apologize to the Hindus for what they did to the Hindus over 1000 years. आप That was कैसी the बात उम्मीद कर रहे हैं? आप कह रहे हो अपोलोजाइज, वो we demand. खुल के We are not pleading. We will demand. We demand an apology. We are not going to the court now for temples. कपिल जी We are कपिल जी going to कपिल demand. जी डिमांड डिमांड अगला बंदा सामने खड़ा हो जिसके साथ आपने बात करनी है, डिमांड करनी है, ये डंडे के जोर से अपनी मनवाते हैं। हमारे पास अभी तो कोई डंडा नहीं है जो हम इन पे चला सके, नंबर 1। नंबर 2, और ये बहुत अहम बात है कि आप डिमांड उससे कर सकते हैं या शर्मसार उसको कर सकते हैं जो कम से कम वो इंसानी मूल्यों के बीच में जीता हो, जिसको हम हिंदू धार्मिक मूल्य कहते हैं। जब उनका मजहब कहता है कि तुमने हर मंदिर तोड़ना है, हर काफिर को कत्ल करना है या कन्वर्ट करना है, दे आर प्राउड ऑफ इट। सी व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज, ये भाषा जो आप कह रहे हो कि पोप ने कर दिया, वो अब उसी किस्म से ये माफी मांगे, यहाँ माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मजहब का काम बखूबी निभाया और आज भी निभा रहे। और तभी ओवैसी साहब के साथ बहुत सारा मुस्लिम ओपिनियन है, जब वो कहते हैं ये वाजू खाना था, वाजू खाना रहेगा कयामत के दिन तक, ये उसकी स्टेटमेंट है, कोई शर्म नहीं। एंड ही इज विलिंग टू शेड ब्लड, ही इज विलिंग टू अनलीश वायलेंस, इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाली, वो हमें गलत बता रहे। सो मुझे लग रहा है कि संवाद की तो यहाँ संभावना है नहीं। संवाद की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे रेफरेंस पॉइंट्स, हमारा मॉरल एथिकल यूनिवर्स ही पर एक नहीं है ना, तो कॉमन पॉइंट कुछ तो होने चाहिए संवाद के। ये तो डंडे के जोर से मनवाते हैं, या तो हम भी डंडा चलाना सीखें जैसे चाइना चलाता है। चाइना जैसा डंडा जिस दिन हमारे पास आ गया, उस दिन ये मान जाएंगे। उससे पहले जायज बात करना, ईमानदार की बात, मतलब है नहीं ना, मजहब में इजाजत ही नहीं है। मजबूर है कपिल जी, बेचारे मजबूर है। कौन मजबूर है? मुसलमान अपने पैगंबर की मानेंगे कि कपिल जी की मानेंगे? पैगंबर जी ने हुक्म दिया है कि हर मंदिर टूटना है और जलील होना है, उसको, उसकी मूर्तियों को खंडित करना। वो तो देव बीइंग वेरी ट्रू। मुझे कभी कभी ये लगता है कि काफी परसेंटेज, काफी नहीं तो साइजेबल परसेंटेज, हमारे जो मुसलमान हैं उनमें साइजेबल परसेंटेज जो है वो तथ्यों पे जाती है, जाने को तैयार है, और वो भी डरते हैं इन मुल्लाओं से, इन ओवैसियों से और दूसरों से, क्योंकि उनको कहा जाएगा बिट्रेयर्स। Because even in these days we heard some young men and others saying that if it is true that it is survey shows that it was a temple, it should be handed over. There are voices like that, but the point is those voices are very few and they are weak, they are afraid, they don't speak up, they never speak up. The voices are there but they are afraid. So in the community, I will not say that 100% are with Owaisi. No, not at all. Cannot be. People see
I mean, I these days I have heard many of them say, even ordinary people, you know, they interviewed that भाई हम तो यहीं के हैं, हमारे भी तो पुरखे हिंदू ही थे, है ना? और अगर ये मंदिर है तो ये मंदिर होना चाहिए. Even the women, men, they say खुल के मंदिर है तो खुल मंदिर होना चाहिए, खुल के है ना? खुल के कितनी आवाजें आई अभी तक? कम है, पर एक तो ऑर्डिनरी में आई हैं. नहीं, Point is that एक दो अच्छी आवाजें आई. कल भी हमने शो जो किया था, उसमें कम से कम 3-4 मुस्लिम्स थे जो खुल के कह रहे थे. तो है, एक नई पीढ़ी शुरू हो रही है, पर वो एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं. वो इस्लाम में रह के ये बात कह नहीं पाते, उसकी इजाजत ही नहीं है. इस्लाम में रह के तो नहीं कह सकते. अब मुझे ये जो कहना है, ये जो मैंने टॉपिक में लिखा था, एक नए युग का संदेश, तो आपको लगता है that this may prove to be a turning point in Hindu history? I think it is a turning point because for the first time, Hindus all over the country have actually woken up to the fact that great injustice has been done and great insult has been heaped on them all these years. And for the first time, we have heard aggressive voices also, aggressive voices that this cannot go on. We have to put an end to it. So these people will not accept. The Hindus will not accept this, that the mosque will continue and the Vishveshwara temple will not be restored. This will not be accepted. अभी And ये this will, चाहत जी का जो सेंटिमेंट है, मुझे लग रहा है चाहत जी का जो सेंटिमेंट है कपिल जी, इट्स वेरी टेलिंग इन दैट सेंस. आप नीचे झुक रहे हो, देख नहीं पा रहे. चाहत जी कह रहे हैं कयामत जरूर आएगी, इस्लाम का खात्मा होगा. अब ये जबान पे लाना भी बात, अभी तक तो हम सुनते आए हैं काफिरों का खात्मा हमारा होना था. ये बात कहना भी मुझे लग रहा है ये नई जबान ही सुनी ये जा नई रही है. जबान है और ये जबान बोली जाएगी. देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड this kind of attitude is developing even in the countries which swore by the liberal thought. And I was reading about Spain, I was reading about Sweden, as we're reading about these what's happening and how they are waking up to what the Hindus have experienced for 1,000 years. You see, they are waking up to how they are being swamped. They say now, Spanish people say, they have not, the immigrant Muslims have not come to stay as Spanish people. They have come to reconquer Spain. You see? So, and then in Sweden, you saw the same Patharbaji, because Patharbaji is a ordained ritual in Islam. It is an ordained ritual. इसलिए पत्थर मारते हैं ये कि जो शैतान है, जहाँ जो शैतान की गुफा है, जहाँ जो शैतान का घर है, उसमें पत्थर मारना है. तो जब रामनवमी का मंदिर निकलता है और हनुमान जी का विग्रह है, वो तो शैतान है, पत्थर मारना है. वो वहां हज में जाते हैं तब भी पत्थर मारते हैं एक पॉइंट पे, तो पत्थर मारते हैं. और ये स्वीडन में भी मारे. And the Swedish people have suddenly woken up to the fact that they were not talking about any human rights or anything and all that. They were claiming their exclusive rights as a parallel culture. They say the Muslims live in a parallel society. They don't want to live in the same society. This is the same thing is true here, barring some. तो ये बताओ मुझे, यूरोप तो जगेगा सो जगेगा, जब जगेगा. अभी तो बहुत से ब्रिटिश लोग भी छोड़ के इंग्लैंड जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जहां उनको इस्लाम की छाया में न जीना पड़े. वो तो जगेंगे सो जगेंगे. अभी तक तो नहीं वो भी पूरी तरह जगे. मुझे ये बताओ, एक तो आपने कहा मोदी सरकार को या जो भी सरकार है,
एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो कि हर ऐसा मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग जो जो स्पष्ट है या जो जिसका नहीं इतिहास जो 12वीं शताब्दी के बाद बना है और एग्जिस्टेंस में है, सबको स्कैन किया जाए। बिकॉज आई थिंक देर इज नॉट ए सिंगल मॉस्क, not a single namaz place, not a single seminary which has not been constructed on the ruins of a Hindu temple or a Hindu place of worship, और जैसे भोजशाला जो कि एक एजुकेशनल प्लेस थी, सरस्वती का मंदिर था भोजराज का धार में, उसको भी तोड़ के बनाया। तो every building constructed after that should be scanned, established, and if it is proved that it is built on destruction, it should be restored to the original owners. इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी का लॉ बनाया हुआ है कि अगर आप प्रूव कर दो कि ये किसी के पास थी, है ना, और आप प्रूव कर दो और आप उसको फिर वक्फ क्लेम कर लेता है। वक्फ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर्स ऑफ लैंड्स इन इंडिया टुडे। या The land jihad, which begins with making a small mazar. You know, suddenly in Uttarakhand hills, there are 10,000 mazars. You see? So this has to be put an end to. Put an end to. The land must be vacated. It is, as the Saudi Arabian prince had very clearly said in response to a question. You know, when Article 370 was revoked, he came, he was asked this question, okay, what do you think of this? The government has, you know, removed Article 370 and Kashmir. He said, but these are all Hindu lands. He used this term. These are Hindu lands. And they were all here. They were here thousands of years ago. You people have changed your religion about some 100, 500, 700 years ago. But they are here. These are Hindu lands. Now, this we have to settle that this is Hindu land. And we want occupation of this. We want occupation to be removed. It should be very clear. And I think it will all tie up with the demand for a Hindu Rashtra. We have now, after all, अगर आप इंडिया में से पाकिस्तान निकाल दें, बांग्लादेश तो नहीं था तब, पाकिस्तान निकाल दें, तो बाकी हिंदुस्तान बचा ना। तो हिंदुस्तान का शब्द इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों निकाला? We still use the Middle East and Asian people refer to India as Hindustan, but we don't refer to it as Hindustan in the constitution. Why? I think we should make it Hindustan, and we should demand that it is basically, you know, the land of the Hindus. And it, Yogi ji has in an indirect way, he has indicated this very clearly, that this is our land, our country, our tradition and culture will flourish. Those who are happy with it live. Those who are not happy with it, go where you are happy. So we have to change the tack. No longer asking questions. We should dictate to the government, demand, create movement, pressurize the government, and now we don't talk to these people. We don't expect any reasonableness from them. We don't talk to them. कपिल जी, आपकी बात सही है, पर हमारी सरकार हमारी सुने तब ना। सबसे बड़ी बात ये है, हमारी सरकार भी तो नहीं सुनती हमारी। उनको जिस किस्म की पैम्परिंग मोदी सरकार के तहत हुई है, वो तो किसी और सरकार ने, शायद कांग्रेस ने भी इतनी नहीं की होगी। You know it better than me. Let us see, because in spite of that, these people are not happy with Modi. They are greatest enemies of Modi ji. So it is something, they don't see that there is somebody who is with them. They see him as somebody who is against them. Because gradually, the ground is slipping from under their feet. And I have a feeling that if the reasonable demand, after it's a reasonable demand, we are only demanding what belong to us. You see, if a reasonable demand, pressure built, asked for, a law, an act, and all followed by objective technological observation and measurement and quantification, we should demand this, and we should demand a Hindu Rashtra, because there is no other way to survive. So I think the government will respond. I have a feeling.
gut feeling. Well, it's very good if you feel so because you know their mind better than most of us. एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो वार्निंग याद आती है कि इनके इनके मजहब में इजाजत ही नहीं होगी कि इस देश को अपना मान ले unless they can convert it into Islam land और यहाँ के लोगों को यहाँ के कल्चर को अपना स्वीकार ले। ये तो उनकी वार्निंग थी जो कभी अच्छा मोदी जी वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत गुण गाते हैं, उनको रिवाइव किया उनके प्रति आस्था, पर ये वाली बातें बाबा साहब की नहीं सुनते। नंबर 2, एंड टू मी दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, जितनी इस देश की एंटी बीजेपी यानी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जितनी भी है, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन इंक्लूडिंग अकाली दल, जिसको अकल होनी चाहिए, अकाली दल का जो इतिहास होना चाहिए वो तो होना चाहिए सनातन धर्म को बचाने का, वो भी इनकी गोद में एक खेला खेल रहे हैं। एक भी नॉन बीजेपी पार्टी मुस्लिम वोट का मोह त्याग के बगैर जी नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती। अब जब ये परिस्थिति है तो जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को लेके जिसका हवाला ये दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, या ये जो कोर्ट प्रोसीजर्स को लेके जिसका हवाला ये दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो आज की है उसके फ्रेमवर्क में तो हम ये नहीं कर सकते, ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्योंकि हम तो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और जिसमें वोट बैंक की ताकत इनके पास है। तो are you suggesting that constitutional democracy का मोह भी छोड़ना पड़ेगा? Absolutely. In fact, we have to have a relook at the constitution because the constitution is loaded against us in several ways, and many of the acts passed from 1950, 51, 52, particularly 2 acts, the Hindu Code Bill. You see, when Patel had said that you should introduce uniform civil code, Nehru introduced Hindu Code Bill, and when Patel said he will take to the streets, he didn't move it till Patel was dead and then passed it, restricted the Hindus to, 3 children, 2 children, 1 child, and let the others grow in their numbers. You see, number 2, the Hindu Charitable Endowments Act. All the major Hindu temples were taken over by the government. These 2 are evidently anti-Hindu acts. And in the Constitution, Article 30, 31, whichever I don't remember exactly, where you don't have the right to start schools where you can teach your religion, your system, your dharma. You cannot. But the next clause says the minorities have a right to teach their religion in the schools. So you have Muslim schools, you have Christian schools, you have Sikh schools also. But you cannot teach, you cannot have the school. So this constitution, which has had 115 amendments or so, while the American Constitution, which was written 200 years ago, has had only about 20 amendments, in the 70 years we have 115 amendments. So naturally, it's like a shirt with many patches. It's better to restitch the shirt. Better to restitch a shirt. I think we have to question with the ballot-based democracy does not suit India. We should go in for a presidential form of government. That is still because, yes, you are going to say something? Yeah, I think we should have a discussion on what that presidential form. America भी तो presidential form है, पूरी तरह hijacked है. अमेरिका भी पूरी तरह hijacked है presidential form के बावजूद भी. और मान लीजिए ओवैसी जी प्रेसिडेंट बन गए जिस दिन, आप कहाँ जाएंगे? नहीं बनेंगे ना. Presidential form में, I would say that if we had choose a president, the Indians would choose Abdul Kalam. 98% people will choose him. But they will not choose, nobody will choose Owaisi. No. I'm not sure Abdul Kalam ji would have won across the election. Huh? Kapil ji, we don't know if Abdul Kalam ji stood in an election against Owaisi, तो वो जीत पाते. मेरा मानना है शायद नहीं. मुझे लग रहा है कि हम
हम गुडी गुडीइज्म में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। देखिए, मैं और आपको वो आई गिव यू नो द सीरियस नहीं, रीजन एक और बात। हाँ why जी। I say ballot box democracy is not proper for India. It was, in fact, it has become an instrument of corruption of all forms, all sorts, and uh, the person who then goes to the parliament or the assembly and is supposed to be the protector of the of values and of righteousness, he goes into the assembly and parliament by most corrupt practices. And it has failed. It is a all the time, it is a source of conflict, it is a source of corruption. We need a system because the Indian genius, after all, who are the people rulers that the Hindus remember? Hindus do not remember kings who built empires. हम राज राज राजेंद्र चोला को रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम उसको वो स्टेटस नहीं देते जो राम को देते हैं, जिसने त्याग किया। हम वो स्टेटस नहीं देते जो हरिश्चंद्र को देते हैं, जिसने त्याग किया। द इंडियन जीनियस is or to have as a ruler the person who renounces and not acquires. And the Indian genius is for one ruler, इवन not टुडे for. आई एग्री विद यू कि हम रिनाउंसर की आज भी इज्जत करते हैं, किंतु अब लाल बहादुर शास्त्री स्टैंड्स आउट एज वन सच पर्सन जिन्होंने सत्ता का लालच नहीं किया और बिल्कुल फकीर की तरह रहे, प्रधानमंत्री बन के भी, पर कितनी जल्दी उनको रास्ते से निकाल दिया गया, कितनी जल्दी निकाल दिया गया। तो ये जो हमारी सत्ता तंत्र है, उसके ऊपर क्रिमिनल्स का पूरा हावी होना, हमारे लिए कोई भी चेंज भी करना, आज के दिन जो लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं लीवर्स ऑफ पावर, वो नहीं है जिनके शक्ल हम टीवी पे देखते हैं। एंड दैट वुड इंक्लूड आवर वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। क्या पीछे खेल खेले जाते हैं जिससे डिसीजंस होते हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है, द डीप स्टेट एज दे कॉल इट। नाउ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस कि हमारे पास, आप सारी बातें कह तो रहे हो, ना हथियार है, द अदर साइड इज फुल्ली आर्म्ड, वो आज भी चाहें तो दे कैन लेट लूज में हम। हमारी पुलिस क्या उसके लिए तैयार है? हमारे पॉलिटिशियन क्या तैयार है? एक शाहीन बाग तो संभला नहीं इनसे, एक सिंघू बॉर्डर तो संभला नहीं। आप सोचिए, अगर ये 100-150 सिंघू बॉर्डर बना दे, हो सकता है योगी जी ना बनने दे, बाकी जगह तो कांग्रेस वाले इनको मदद करेंगे सिंघू बॉर्डर बनाने के लिए, कितने मर्जी वहां बना लो शाहीन बाग, कांग्रेस रूल स्टेट्स में या Depends on the will of the government, the will of the government. If the government finds that now no reasonable argument will prevail, and after all, you will remember that when Mahendra Singh Tiket, father of this present Tiket, he launched a farmers' agitation and he came to the same border, this Ghaziabad border. And on the very first day, when he sat down, Indira Gandhi ordered firing. 15 died and the rest ran away, and there was no sitting on the fence. So it depends on the will of the government whether you will. After all, they were allowed to sit. They were allowed to sit. Not एक that और the बात government is not capable of preventing them from sitting. They were allowed to sit. And this is all democracy. And I think democracy is a romanticized notion. I don't think democracy is what we can really function for us. In I fact, would say it is the whole scenario is very depressing. People who are listening to you, they will like to listen to you to some, some point that what is the kind of action that is needed to change the situation. Because the courts are against us, the laws don't favor us, the constitution is unfavorable. Then what is the way? I think the way is we should change the mode of action. We also stop going to the court. We also stop having dialogues with people who won't listen. Then what is the other method? The other method is there is mass agitation for changing the character of the country. These are not talking of the character of the buildings. I think we should change the character of the country. And this is very important. And once we change the change, part of that will be, and secondly, all buildings after 1194. In fact,
when they made this law, 1991 or 90, they said 1947. No, it should have been 1193. They should have said whatever existed before 1193, that character should be retained. Why 1947? So and this is a bad law. Bad law. I think that we can also ask the government to revoke it, to revoke this act. How can you bind the future generations? You know, I mean, you are telling the future generation of young Hindus to keep on taking the insult, to keep on seeing, their a civilized community or a civilization which can't defend its women or its places of worship is bound to die. It will finish. I mean, वहां गिरिजा टक्कू देख लीजिए, गिरिजा टक्कू. शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को, और शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर जो हैं, हमारी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के बाद भी 75 साल हमारे नहीं हुए हैं. It is our weakness. We should give up the weakness. We should use strong methods. I can't say what they are. I don't know. But I think there have to be other methods now. Zubairi says you have asked a wrong question. In fact, I say we have adopted wrong methods so far. These methods do not work with them, nor with the courts. मैं तो मानती हूँ कि लातों के भूत नहीं बातों से मानते, और उनको एक ही भाषा समझ आती है वायलेंस की, उनको एक ही भाषा समझ आती है स्लॉटर की, उनको कोई और भाषा समझ नहीं आती. चाइना में बड़े शांत होके बैठे हुए हैं. हाँ. पर कंक्लूड हम इस बात पे करते हैं. आई थिंक फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एरा दैट वी आर लिविंग इन, कि हिंदुओं को बहुत सालों दशकों बाद अपने मंदिरों का, धर्म स्थानों का महत्व समझ आने लगा है. Yes. हमने मंदिरों को केवल जाके चढ़ावा चढ़ाया, भगवान से, ईश्वर से कुछ मांगा, इट्स लाइक डूइंग अ डील, कमिंग बैक. उन पे कोई हमारा रिश्ता नहीं. पूरा रिश्ता जो टूट गया जब सरकारीकरण हुआ. परंतु हमने जो अपने लोकल मोहल्ले के मंदिर हैं, उनसे भी रिश्ता वो नहीं रखा. देवर the importance of mandirs as centers of learning. हर मंदिर में गुरुकुल साथ है होता था. Yes. हर मंदिर में स्वास्थ्य सेवाएं, उनके साथ वैद्य वगैरह, कितनी नॉलेज होते थे. Yes. नॉलेज ट्रेडिशंस वहां बेस्ड थी. Maintain और हर मंदिर, तालाब, पानी, पर्यावरण, पेड़ पौधे, इन सब का आसपास में. चौथी जो बात है, हर मंदिर हर वक्त लंगर मिलता था, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता था. कोई मंदिर ऐसा नहीं था. हम सोचते हैं सिर्फ गुरुद्वारों में लंगर होता है, बट अगर आप पुराने मंदिर जहां साउथ में बचे हैं, द फीडिंग हॉल्स यू सी आर ह्यूज. अब वो खाली है, पर दोस फीडिंग हॉल्स टेस्टिफाई टू द फैक्ट कि कोई भूखा ना सोए और किसी को भीख ना मांगनी पड़े, क्योंकि प्रसाद मान के, ईश्वर का प्रसाद मान के दिया जाता. और हर हिंदू अपनी फसल का हिस्सा पहले मंदिर में पहुंचाता था, ना कि सीधा अपने घर. तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड शेयरिंग के जो ट्रेडिशंस रही है, तो कोई भिखारी होने की जरूरत नहीं थी. किसी को बिना इलाज के मरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर मंदिर के साथ वैद्य आपके जुड़े हुए थे. और जो वैसे भी इफ यू आर वेल फेड, यू ड्रिंक क्लीन वाटर, पानी का जो प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स थे. हर मंदिर के साथ बड़े तालाब, हर मंदिर में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, हर मंदिर के साथ इतनी एक्टिविटीज जुड़ी थी. जिस दिन हमने वो जोड़नी शुरू कर दी, चाहे छोटे पैमाने पे, अपने लोकल मोहल्ले के मंदिर, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. लोकल मोहल्ले का मंदिर वीकेंड्स पे कम से कम ज्ञान दे, महाभारत रामायण की क्लासेस हो, वहाँ शिक्षा ज्ञान परंपराएं जो हमारी छूट गई हैं, वो मंदिर में अगर उपलब्ध होनी शुरू हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि वो जुड़ाव जो होगा, वो हमारे मंदिरों को दोबारा से पुनर्जीवन देगा. और ये एहसास ही आ जाना
कि मंदिर इम्पोर्टेंट है। हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाकर सैकड़ों साल तक ये जो तोड़े फिर बने और हर बार जब टूटने के लिए आए, मैंने जैसे कहा ना अवरना जो नॉवल है भैरप्पा का, उसमें क्या रेजिस्टेंस के फॉर्म्स हुए, ये इतिहास में ये खुद ही बताते हैं। कितने लोगों को इन्होंने स्लॉटर किया हर मंदिर को तोड़ने से पहले, बताते हैं। जेनोसाइडल वायलेंस हुई हर मंदिर को तोड़ने से पहले। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल्स, दीज आर नॉट जस्ट आर्किटेक्चरल वंडर्स, वो तो है ही है, और मूर्खता इनकी, इतनी सुंदरता को आके तोड़ रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। मतलब you have to be completely crazed to come and destroy somebody's place of worship, which are also so beautiful. It's a work of तो art. हाँ, great works of art, unparalleled works of art. और ये जो अब एहसास हमें हो रहा है, तो मेरे व्यूअर्स से तो मैं यही कहूंगी, कोशिश कीजिए, आसान काम नहीं है, कम से कम आपके मोहल्ले का मंदिर आपका अपना बन जाए, वो एक कम्युनिटी प्लेस बन जाए, ज्ञान परंपरा को बचाने की, बच्चों को प्रदान करने की, वहां कम से कम आप, और कुछ नहीं, जब कोई आपदा आए तो मंदिर should become a सुरक्षा कवच, which is from where self defense should be organized, जैसा होना चाहिए। तो अब ये सबसे बड़ा आउटकम है। एक बात मैं, आपकी बात हो गई, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही अच्छी कही है, वेरी पॉजिटिव एंड आई थिंक इट्स रिकंस्ट्रक्टिव, वेरी। एक मैं कहता हूँ कि कई बार मैं सोचता हूँ कि इंडियन मुस्लिम, भारत में जो मुसलमान लोग हैं, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं कभी भी, मुझे कई एविडेंस कई बार मिलते रहे कि हम उनको एज मोनोलिथ नहीं मान सकते, पर उनके जो अंदर से डिविजन्स होते हैं या सोच के वो प्रकट नहीं होते। इस वक्त जो लीडरशिप है उनकी, इट इज इन द हैंड ऑफ ओनली मौलवीज एंड मुल्लाज एंड यू सी they hold a tyrannical power over the people. I hope and pray that somehow there should be a parallel or a different or an alternative leadership also in the Muslim society, and if that may also change the scene a little, you see, just as a social change, a little social change proposed by the triple talaq bill, it brought many voices out. I think more such. That I consider it almost farcical, Kapil ji. Another day we'll discuss it. But I think within Islam, उसमें रह के तो वही हाल किया इन्होंने जो रिजवी साहब का हुआ। रिजवी साहब जेल में पहुंच गए। अच्छा, आज उनको बेल मिली है, बाय द वे, इट्स अ वेरी हैप्पी डे, वेरी हैप्पी डे दैट ही गॉट बेल। पर आप सोचिए, घर वापसी की सजा 4 महीने जेल काट के आए, जेल काटनी पड़ी, भारत सरकार ने दिया, हिंदू सरकार ने दिया ये घर वापसी की सजा। तो नई लीडरशिप, ही वाज इमर्जिंग एज अ वेरी पावरफुल लीडर, और अगर उनको इस तरह सताया न जाता, उनको जलील करने का जो सारा सिलसिला चला, he is made to appear like a disruptor, he is made to appear like somebody who was trying to bring disharmony in society। और ये तो मोदी जी के चलते हुआ, ये तो धामी जी के राज में हुआ। नहीं, तो ये असल में देखिए, आपकी जो कोर्ट्स है ना, ये दे आर इन्फेस्टेड बाय पुलिस ने केस कैसे किया, कोर्ट्स, पुलिस ने केस कैसे कर लिया अपने आप ही, चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं। ऐसा इतना हाई प्रोफाइल बंदा जेल में जा रहा है, सीएम को पता ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आई थिंक वी हैव टू accept that there are forces within us which are also working against us. Yeah, जी। So important point is मंदिरों का महत्व समझ आना। To me that's the start of a नया युग। मैं भी बहुत alienated फील करती थी मंदिरों से, क्योंकि वहां कुछ होता ही नहीं है, जाओ चढ़ावा चढ़ाओ आ जाओ, और दर्शन के लिए भी चलो 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 चलो, ऐसा होता है बड़े वाले में, मेरा तो मन ही नहीं लगता।
it has to be a dharma sthan. सबसे बड़ी बात है, मंदिर is not just a building to go and make a 2-minute Make prayer to God. offerings. It's a It has to धर्म be, स्थान. धर्म स्थान का मतलब धर्म का काम हो कोई. धर्म का काम में आता है ज्ञान परंपराओं को बचाना और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना. हमारे मंदिर तो सेल्फ प्रोटेक्शन भी नहीं कर पा रहे. जो सारे इतने टूटे, आज भी बताओ. socio-cultural, it is have become socio-cultural institutions. जो साउथ में अभी भी कुछ टेम्पल्स हैं ऐसे जो करते हैं, but जी, it is gone जी, here. It should जी. come back. But इतना radical, कई बार मैं तो सोचता हूँ कि at this age now maybe हाँ, I don't think one can see better times. I think things are they are coming to a boil. They are coming to a boil. Let's see, maybe something good will come out of it. जी. वेल आई होप सो टू. अच्छा व्यूअर्स, कल के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ. बहुत से सुपर चैट मैं दिखानी, दे वर शोन ऑन द स्क्रीन बट वी कुड नॉट टेक अप देम फॉर क्वेश्चंस. उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, माफी चाहती हूँ. बहुत से सुपर चैट्स थे और आपको बुरा भी लगा होगा, पर इतनी लंबी और इतनी इंटरेस्टिंग बहस होती जा रही थी, वो डिस्कशन, दैट आई जस्ट इट स्लिप माय माइंड टू टेक देम ऑन. अगर अभी कोई है तो ले आइएगा. एक तो थे तो मैंने देखा, कल की तरह बहुत ज्यादा तो नहीं है. ओवेसीज क़यामत विल अराइव शॉर्टली इंशाल्लाह. आपके मुंह में घी शक्कर, पावर प्रिविलेज जी. और कोई है कमेंट्स जो है? ऑलराइट, चाहत सिंह, क़यामत जरूर आएगी. इस्लाम वो तो हमने कर लिया था. कम से कम ये बात बोलने लग गए. अब हम मदनी मस्जिद, JNK एंड भोजशाला की बारी. बिल्कुल सही है, पर अब इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप. चाहत सिंह जी, सबसे अच्छी बात है, अब ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है. आई थिंक हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, गांव-गांव में ऐसे हमें मंदिर मिलेंगे जिनके ऊपर वैंडलाइज करके मस्जिदें बनाई गई हैं, या मदरसे, या ये जो कब्रें ही बना देते हैं और कुछ नहीं करते. तो ये जरूर अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो दूर तक जाएगा. अब ये आई डोंट थिंक एनीबडी कैन पुट अ लिड ऑन इट. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे आज्ञा लेते हैं. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर to our channel, and thank you very much for staying with us night after night. Please do help the channel grow. Shubh Ratri, Vande Mataram. Namaskar. Namaskar.